Welcome friends to SES Park. So today we are going to do this exercise in your workbook. It's page number 18. It is wedding customs. It is wedding customs. Read about what grooms wear in different countries. Write the country under the picture, right? This, and this, right? And then brides and groom want to look their best on their wedding day. Grooms in different countries wear different clothes. In China, grooms often wear a jacket made of red silk, right? In Malaysia, men wear something special on their head called a tanjak, right? When they get married, in Scotland, some grooms wear a skirt made of wool. It's called kilt, right? So now we know that this is what? This is Malaysia, this is China, and this is Scotland. ठीक है जी, this we learned from here. ठीक है जी, हमने ये पढ़ने के बाद हमें पता चल गया. ठीक. So this is what? This is Malaysia, this is Scotland, and this is China, right? Because here we see the silk shirt, here we see the groom's skirt of wool, and there we see in Malaysia somebody wearing the groom is wearing a something special on his head like a cap, right? So this is supposed to be Malaysia, this is Scotland, and this is China. Okay, over to you. Complete the chart above wedding customs, the special spaces in table. First of all, the custom, wedding kimonos, hand painting, wedding liai, throwing rice or flower petals, right? We do this where we live. Do we do that with these wedding kimonos in Pakistan? Do we do? No, we don't. We don't do this where I live. This sounds fun or this doesn't sound fun, right? We don't do this where I live, right? And then this doesn't sound fun. Then hand painting, yes, we do this where I live, and this sounds fun, right? And then wedding live, we don't do this where I live, right? And this doesn't sound fun. And throwing rice on flower petals or rebel flower petals, we don't do it where I live, but this this sounds fun. Okay, so this can be one of the way of giving answers. You may differ, you may have different answers. You may like the wedding lie, or you may like the wedding kimonos. So this is your choice, but you just have to fill up the chart. Okay. Okay, dears, now we are on page 19, and here we'll have to make use of English. यहाँ पर इंग्लिश जो है ना उसका यूज़ करना, इस्तेमाल करना हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द लैंग्वेज टिप्स. लैंग्वेज टिप्स क्या हैं कि टाइटल्स के लिए हमने पढ़ा है कि मिस्टर यूज़ करते हैं फॉर अ मैन, मैरिड और अनमैरिड, राइट. मिसेस यूज़ करते हैं फॉर अ मैरिड वुमेन, and Miss we use for a unmarried woman or a girl, and MS for a woman, married or unmarried. If we know or don't know okay she is married, then we can just write MS, right? So read the information above the teachers. Write each teacher's title in front of their surname. Maria Pedra teaches maths. Her husband's surname is Pedro. So we know that Maria is married, and we know her husband's name also. So for sure we can write Mrs. for her. And then Mark Gray is the only male teacher. His subject is music,
Emma Cox doesn't like people to know if she is married or not. She teaches English. The science teacher Anna Lowe is unmarried. So for Mrs. Pedra, we write because we not only know that she is married, but we know the name of her husband also. So then is Mr. Gray. For man, he's a man, so we write Mr. Gray. And then Anna Cox, she is what? She is science teacher, but she is unmarried. So we write no, no, sorry. Miss Cox जो है, yeah, we don't know that she is married or not, and she teaches English, right? And then Miss Lowe, we know that she is unmarried. So ये बातें जो हमें पता होती हैं वो हमने लिख ली हैं इधर. अच्छा, अब हम आते हैं कि which teacher is in which classroom, which subject does the teacher teach. Look at the clues below, and in activity 3 write the name and subject on each classroom door. Remember to use the teacher's title, right? The science classroom is next to the English classroom. सबसे पहले हमें जो है ना मिस कॉक्स का पता है. मिस कॉक्स शी डज व्हाट? मिस कॉक्स जो है शी टीचेस इंग्लिश, राइट? हमने मिस कॉक्स के नीचे लिख दिया इंग्लिश, राइट? अब द साइंस क्लासरूम इज नेक्स्ट टू द इंग्लिश क्लासरूम. ये इसके नेक्स्ट जो है दिस इज साइंस क्लासरूम. यहाँ पर साइंस कौन हमें पढ़ाता है? हमें मिस एना पढ़ाती हैं. मिस एना पढ़ाती है हमें साइंस, एंड शी इज़ अनमेरिड, सो वी राइट मिस एना एंड साइंस हियर, राइट? एंड देन नेक्स्ट जो है इसकी अगली चीज़ क्या है? द म्यूज़िक क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू द साइंस क्लासरूम. ये इसके नेक्स्ट जो है ये वाला है. मिस ग्रे हमें पढ़ाती है, मिस्टर ग्रे हमें पढ़ाते हैं, म्यूज़िक पढ़ाते हैं. इसके नेक्स्ट टू दिस साइंस क्लासरूम. एंड देन द मैथ क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू द म्यूज़िक क्लासरूम. अब ये मैथ क्लासरूम आ गया. ये हमें मिसेस पेड्रा पढ़ाती हैं एंड मैथ्स पढ़ाती हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट का यूज़ हमने सीख लिया कि इसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये है, राइट? So now we know how to use the word next. We had some doubts once we were reading the learner's book. Now we are clear. Okay? Are you clear? अब सबको समझ आ गया ना ये बात कि नेक्स्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं. जब हमने कहा कि द साइंस क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू द इंग्लिश क्लासरूम. इंग्लिश क्लासरूम तो हमें ऑलरेडी पता था, तो साइंस क्लासरूम जो है वो जो नंबर 2 हो गया, ठीक है? और नंबर 2 में हमें पढ़ाती मिस एना है, साइंस पढ़ाती हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट 2 हो गया, 2 3 हो गया. मिसेस ग्रे हमें मिस्टर ग्रे जो है म्यूज़िक पढ़ाते हैं. हमने पढ़ा है कि जी द म्यूज़िक क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू द साइंस क्लासरूम. सो साइंस क्लासरूम के बाद वाला जो होगा वो कौन सा होगा? म्यूज़िक वाला, और वो मिस्टर ग्रे हमें पढ़ाते हैं. फिर उसके बाद जो मैथ क्लासरूम इज़ नेक्स्ट टू द म्यूज़िक क्लासरूम. मिस्टर ग्रे के बाद वाला कौन सा आ जाएगा? मैथ्स वाला. ये हमें मिसेस पेड्रा पढ़ाती हैं जो मैथ्स पढ़ाती हैं, ठीक हो गया जी? सो नाउ वी आर क्लियर कि हाउ हम नेक्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं. द वर्ड नेक्स्ट हम कैसे यूज़ करते हैं. देयर शुड बी नो डाउट कि नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, अगला, अगला. ओके? Then now we go on to the page 20. Here we have a poem, right? Read, find one more word to rhyme each pair of words. The picture will help you. ये देखें इसमें वन से क्या है? वन, बिगन, और ये क्या हो सकता है? ये देखो ये क्या कर रहा है बच्चा? रन और हैविंग फन. To, new, and who, right? 3, me, fee. 4, more, score. 5, live, live. right? ये हमने कर लिया कि जो ये इसकी जगह हम 3, मी, नी भी कर सकते हैं. वी कैन डू नी, ठीक है? 5 यहाँ पर अलाइव की जगह ड्राइव भी कर सकते हैं. ड्राइव वाला हमें जो एक मिल गया, ड्राइव, ठीक है? 4, ठीक है? और ये हमें बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से मिल रही हैं.
3 नी, ठीक है, 5 ड्राइव, 4 score, right, and 1 run, ठीक है, okay. Now we complete the poem with the rhyming words. When I was 1, I wanted to, ये क्या था हमने क्या, I wanted to run. When I was 2, I got my first shoe. When I was 3, I hurt my, ये क्या है, knee. When I was 4, I played on the floor. ये floor पे बच्चा दौड़ रहा है ना. When I was 5, I wanted to drive. ठीक है. Now make up your own poem. Try to make it rhyme. Here are some words that help you: stick, trick, fun, sun, cake, bake, lake. When I was 6, I held some sticks. When I was 7, I had fun. Right? Now I am 8, I go to the lake. ठीक हो गया ना जी, लेक हमने यहां से यूज कर लिया, ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया. अभी हमने क्या किया, 1 बिगन रन, 2 न्यू शू, 3 मी नी, 4 मोर स्कोर, 5 लाइव ड्राइव, ठीक हो गया. When I was 1, I wanted to run. When I was 2, I got my first shoe. When I was 3, I hurt my knee. When I was 4, I played on the floor. When I was 5, I wanted to drive. Now make up your own poem. Here, what you did was, when I was 6, I held some sticks. When I was 7, I had fun. Now I am 8, I go to the lake. ठीक हो गया जी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया. Okay, friends, now we go to our page number 21. यहाँ पर हमें सबसे पहले what we see is we have a challenge here. हमें चैलेंज दिया जा रहा है, हमें क्या करना है भाई. What was your favorite toy when you were very young? Write 1 or 2 sentences about it. Okay, think about it. That did you have a favorite toy? Okay, once I was young, I had a favorite toy. I had a teddy bear. I used to like it very much. So I'll write, I had a teddy bear. I liked it very much. So these are 2 sentences that I can write about whatever favorite thing you had. Say you had a doll and you liked it very much. You had a whatever and you liked it very much. So it's very simple, right? Now we go to the use of English. Last week it was Sarah's birthday. Look at the picture. Write 5 questions to ask Sarah about her party. Write Sarah's answer too. Use was or were. Use some of the words in the box. Right? These are the language tips also. Was and were. Was I happy? Were you happy or they were happy? Yes, I was. No, I wasn't. You or we or they were. No, you, we, they weren't. Were there a cake? Yes, there was, or no, there wasn't. Were there any balloons? Yes, there were. No, they weren't. राइट ये हमें लैंग्वेज टिप्स मिल गई हैं कि हमने किस तरीके से सेंटेंसेस बनाने होते हैं और हम हेल्पिंग वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं. राइट सो नाउ गोइंग ओवर ये भी हमें हमारे पास एक बॉक्स है कि केक, नाइस फूड, बैलून्स, प्रेजेंट, फ्रेंड्स, ग्रैंड मदर, मॉम एंड डैड एंड हैप्पी. फर्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं कि अब हम सारा से पूछते हैं कि जी हाउ ओल्ड वर यू. भाई हम सारा से पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम्हारी बर्थडे हुई थी, तुम कितनी बड़ी थी इस वक्त. तो ये देखें इस पर लिखा हुआ है, केक भी जो बना हुआ है ना इस पर 8 लिखा हुआ है. हाँ, हमें एक टिप भी मिल गई. सारा का आंसर क्या होगा, आई वॉज 8. ठीक हो गया ना, इट्स वेरी सिंपल.
अब फिर उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि वाज देयर, हम कोई और चीज़ क्या पूछ सकते हैं? हम कहते हैं वाज देयर अ केक, सारा वुड से यस देयर वाज अ ब्यूटीफुल केक। देखो, लुक एट दिस, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल केक। हम उससे पूछते हैं वाज देयर अ केक, सारा शेज यस देयर वाज अ ब्यूटीफुल केक। एंड फिर हम एक उससे क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी गेस्ट वर देयर। सारा रिप्लाई करती है, देखें एक सारा के अलावा बाकी कितने, 1 2 3 4 5 6 7। सारा सेज देयर वर 7 गेस्ट्स। इजी ना, हमने देख लिया, एक तो सारा हो गई ना, बाकी उसके 7 गेस्ट्स हो गए। ओके, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अब एक क्वेश्चन उससे हम सारा से पूछते हैं वाज योर ग्रैंड मदर देयर। हमने ग्रैंड मदर का इधर से ले लिया लफ्ज़ कि वाज योर ग्रैंड मदर देयर। सारा सेज यस शी वाज ऑल्सो देयर, राइट। अब फिर हम पूछते हैं कि वर देयर एनी बैलून्स, वर देयर एनी बैलून्स। इधर देखें बैलून्स हैं कोई, नहीं है ना, तो व्हाट वुड शी से, नो देयर वरंट। ठीक है। सो ये कितनी इजी एक्सरसाइज थी और हम इसके लिए इतने परेशान हुए हुए थे। ठीक है ना। आपने अभी इस, अगर आप खुश हुए हैं ये एक्सरसाइज करके, तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का लाइक करेंगे। और हम ये अगर अपने दोस्तों वगैरह किसी को परेशानी हो या चेक पॉइंट के लिए, तो उनको भी ज़रूर बताएं कि ये वीडियो देख लिया करें। हमारे वो देख लेंगे, उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमें लाइक करना भी ना भूलिएगा अगर आप हमें पसंद करते हैं। और अगर कोई मसला हो तो हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।